Oh. 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 सदाशिव समारंभां सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्य मध्यमां शङ्कराचार्यमध्यमाम् सदाचार्य पर्यन्तां स्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरां वन्दे गुरुपरम्पराम् वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवम् चाणूरमर्दनं चारूढार्चनम् देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानाध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानकर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्. त्यागाशान्ति अनन्तरम्. So this is the 12th shloka of 12th chapter, which summarizes the entire teaching, not Bhagavad Gita teaching, any teaching. अभी हम लोग that's what we were talking about. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्. अभ्यास से शुरू होता है सब कुछ. Everything starts from practice. Practice means doing, bringing those teaching in personal life. Doesn't matter what teaching. Even if it is school teaching, like middle school, high school, everything starts from abhyas. And ultimate goal is shanti. Shanti भी anantaram, uninterrupted. It's like constant flow. वो हमारे यहाँ शास्त्र में डेफिनेशन देते हैं अनंतरम शांति की, जैसे तेल की धार होती है. Oil, when you drop oil from a vessel, is unbroken. Oil is a one string. You cannot say, oh, there are drops of oil. No, it is just one string. Water, we can still have the drops. Water, if you splash, you can see the drops. But oil is just, otherwise oil will not fall. So they say that Shanti is like the stream of oil, uninterrupted. It's just one. So अभी तो हमारी शांति आती जाती, like we have some शांति, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर कुछ हो जाता है, फिर दूसरी अशांति आ जाती है. Uninterrupted. Yeah, I mean, they say that it is not that you beat the drum कि मैं शांत हो गया, मैं शांत हो गया, मैं शांत हो गया. You don't have to do that. You still behave like a normal person, but अंदर से uninterrupted peace. What? So what? It's like that. Anyway, so that's what the 12th shloka of 12th chapter. So we'll read the 7th shloka of 2nd chapter, which is Arjun's surrender or Arjun's request or prarthana for the teaching. And I do that every day, three times during my sandhya. And that I have included that in my sandhya. Yeah. But that's the real prarthana and directly to Bhagavan. So 7th shloka of 2nd chapter, which Arjun is saying to Bhagavan what he needs. Karpanya dosho upahat swabhavah अर्पण्य दोषो वह स्वभावः प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः रक्षा नित्यामि कर्मधर्मदेव यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यज्ञयज्ञासुरूमहते sorry शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यत्यस्मे साधिमां तां प्रपन्नम्. आदिमां समः. Yeah, you all of us can read that and try to memorize, because this is a प्रार्थना. I mean, I found this is one of the best प्रार्थना. Directly कृष्ण से आप बात कर रहे हैं कि भगवान मुझे, and we can imagine that I'm sitting in the chariot, the lower part of the chariot, because I'm depressed. And we last time we talked about that Arjun's problem, and we talk the second part at the end. Arjun's problem was Vishad. So I'm in Vishad, I am in confusion, I am in delusion, and sitting in the lower part of the chariot, and Bhagwan is sitting right there. We can imagine ourselves and just do this prarthana, and then Bhagwan will impart the teaching which he gave to Arjun. So, so that's the prarthana where the whole teaching actually, ऐसा कहते भी हैं कि when there are followers, there is a fame, and this is election time.
When there are followers, there are leaders. It's not other way around. There is no leader and he or she will create the followers. There are followers and leaders will come. So same thing, जैसे कि शिष्य अगर होता है तो गुरु आ जाता है. If I want to learn, then teaching will come. It is I want to learn. That is important. So that's why Arjun has said that Shadi Mam Tvam Prapannam. Shadi means again Shishya. The word has come from same Shiksha. So I want a Shiksha from you. And Shiksha is nothing but teaching. इसीलिए the one who gets the Shiksha become a Shishya. So an Acharya is the one who gives the Shiksha. So that's what this shlok is, that Shadi Mam Tvam Prapannam, because Karpanya Dosha Upahatso. I have weakness of heart. That is the disease I have, right? My problem. And then Prachami Tvam Dharma Sammudha Cheta. I'm asking you, what is the Shreyas? Because I am confused about my dharma, Swadharma. And that's the entire Gita is answer to this inquiry. That's it. Entire Gita. This is what. So we have to say every time, because we are also reading Bhagavad Gita, jo bhi padhte hain. That's what we want. Ultimately, that Shanti Anantaram. So we are on 6th chapter. We finished 28 shlok. We'll just repeat 28 and then continue with 29 to whatever 30th shlok. Because now last time we saw that the 28th shlok will repeat, right? And then Arjun is asking, after all this teaching is done, and as I said like earlier also, first 5 chapters were teaching. Only 2 things were taught in first 5 chapters: Gyan and Karma. That's it. Oh, sannyas Bhagwan laya, but sannyas is related to Gyan and Karma. Only 2 things in first 5 chapters, first 4, like in 2nd, 3rd, 4th, 5th. First chapter the Vishad. So 4th chapter Bhagwan taught only 2 things: Gyan and Karma. That's it. 6th chapter, this is the only chapter, my knowledge, in Bhagavad Gita, where Bhagwan is asking Arjun to do something. Forward also is all going to be teaching. आगे पूरे 7th से लेकर के 18 तक is all teaching. Fundamentals, values, the principles, all those things, like the playbook of life, discipline, rules, regulations, everything Bhagwan will talk about of society. And 6th chapter is only where Bhagwan has told Arjun to do something. They will do the dhyan, that's why this chapter is called Atma Sanyam or Dhyan Yoga. And we saw and we do that, right? 11 to 15 chapter is Bhagwan told Arjun to do dhyan. So this is only chapter where Bhagwan has taught something. Otherwise, उन्होंने ज्ञान ही दिया है. And the reason is, I may know Karma Yoga, I may know Jnana Yoga, but to assimilate this Karma and Jnana, you need to do Nididhyasanam. Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. Shravanam is kind of a karma. Mananam is Jnana, because through Mananam you realize, oh, this is the answer to my inquiry. So that becomes Jnana. The moment I get answer to any question, that becomes my Jnana for the rest of my life. I asked my dad when I was a kid, every kid does, Dad, is this hot? The iron when dad is doing, yes, it is hot. And then you touch it. Oh, then you know that dad's answer is correct. It is hot. That has become my knowledge for the rest of my life, that iron is hot or fire is hot. Similar, and that comes through Manana. Manana is you did the practice, Anubhav basically. Then Nididhyasanam. Nididhyasanam is Dhyan. Then knowledge sinks into me. And that is, so this is basically, which is chapter is about Nididhyasanam, we can say in Vedantic terms. So we'll read 28 shlok and then continue. 28 shlok of 6th chapter. Yunjanevam sadatmanam. Yunjanevam sadatmanam. Yogi vigata kalmashah. Yogi vigat kalmashah. Sukhena brah sansparsham. Sukhena brahma sansapsham. Atyantam sukhema ashnute. Atyantam sukhema shrute. यह निष्पाप योगी इस प्रकार मन को निरंतर आत्मा में लगाते हुए सुख से परम ब्रह्म की अनुभूति करते हुए
अति आनंद प्राप्त करता है। Thus, constantly practicing union with the self, the yogi, freed from sin, easily attains the infinite bliss of contact with Brahman. Yeah, so now the Vigat Kalmasham is Paprahit is basically purity. And the whole goal of all this teaching, any teaching, is to raise the Sattvagun. So purity means Sattvagun. So that's what Bhagavan is saying. This person has enough Sattvagun, so this person can enjoy the Sukham Atyantam, Anant. See, again the same thing. When we say Anant Shanti, uninterrupted, this Sukh is also uninterrupted. And when the Sukh is, otherwise Sukh and Dukh, they come and go. When the Sukh becomes uninterrupted, it becomes Anand. And that's why our goal of all our teaching is to have Anand. So Bhagavan is saying, isko Uttam Sukh means, and how Uttam Sukh will come? Uttam Sukh will come through Nididhyasana. And that's why this chapter is through Dhyan. Without meditation, that Uttam Sukh will not come. And it is it's a science basically. अब आजकल मेडिटेशन सब जगह सिखाते हैं, which is फिजियोलॉजिकली विच इज गुड. आप बैठे हैं 15 मिनट ठीक से बैठे हैं शांति से, कम आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, दूसरे को तो नहीं कर रहे हैं. इतना तो हो ही रहा है मेडिटेशन में, आप हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन 15 मिनट के लिए दूसरे सुखी हैं कि चलो बंदा बैठा शांति से. लेकिन सही में अगर आपको उसका आनंद लेना है, अत्यंतम सुखम आनंद लेना है, then we have to go through the process. That's why they say सत्वगुण. फिर then we'll go to the 17th chapter. आहार की बात आएगी कि आपको क्या खाना है, कैसा व्यवहार रखना है, सेंस कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह. देन ओनली यू विल गेट टू दैट स्टेज विच वी, आजकल सबसे पॉपुलर पर्सनालिटी जो पूरे वर्ल्ड में है, when you say meditation and one picture comes into mind, बुद्ध. सबके दिमाग में एक पूरी दुनिया, like celebrities, Hollywood people. अभी last week all the comedians of Hollywood, like Steve Martin and all those famous comedians, they went to see Dalai Lama. All of them, 60 of them, they went to see to Dharamshala to talk to Dalai Lama, because Dalai Lama is a modern Buddha basically. Buddha का representation is Dalai Lama. So सब लोग उसको मिलने गए थे, 50-60 comedian, because they think कि this is where the shanti is, or the anand is. So लेकिन दलाई लामा बुद्ध को हुआ इसलिए सब लोग बुद्ध को मानते हैं, बाकी लोगों को नहीं हो रहा इसलिए सोचते हैं कि इनके पास कुछ होगा. तो बुद्ध यही कहते थे, एक ही तरीका है ध्यान, जो गीता भी कहती है, हमारे शास्त्र भी. कृष्ण को ये होता था, राम जी को ये होता था, महावीर को, स्वामी को वही होता था, अनंत आनंद, लेकिन वो ध्यान से ही होता था. That's why every tradition teaches ध्यान. There is absolutely, there is no other way we can get that uninterrupted peace. But ध्यान के लिए प्रोसेस है, that is Bhagavad Gita. That's why I'm a big promoter of Bhagavad Gita. The reason is that because I don't know how many you can read Buddha. I have read Buddha teachings also. I have read everything, and everything is good. But जितना अच्छा भगवद गीता में 700 श्लोक, out of 700, 650 कुछ ही हैं भगवान के जो बताया. It is so clear, it is so organized and so simple that you don't have to go anywhere. Otherwise क्या होता है, एक डायमंड सूत्र पढ़ो, फिर बुद्ध का कुछ महायान पढ़ो. I mean, you have to read all these to come to conclusion. Here somebody has done that. Bhagwan has done that. So that's the reason Bhagavad Gita is so widely accepted and becoming more and more. Acceptance is increasing, basically, of Bhagavad Gita teaching. So we'll read 29th. What happens after that? Anand you get, right? So next slok says, Sarva bhutastham atmanam. Sarva bhutastham atmanam. Sarva bhutani chatmani. Sarva bhutani chatmani. Ikshate yoga yuktatma. Ikshate yoga yuktatma. Sarvatra samadarshanaha. सर्वत्र समदर्शनः. सर्वत्र समान भाव वाला और युग से युक्त आत्मा वाला योगी आत्मा को सभी भूतों में स्थित और सभी भूतों को आत्मा में देखता है. United to the self by yoga,
He sees the self in all beings and all beings in the self. He sees the same everywhere. Yeah, this has a fifth chapter. Maybe we saw one shlok was there where Bhagavan says that Brahmane Gavi Hastini Shuni Shopakecha Pandita Samdarshina. And this person sees same Atma in an educated person, illiterate person, cow, elephant, dog, same Atma. Same thing Bhagavan is saying here, but here he is saying in the context of sixth chapter, Atma. He's the word is Yog Yukta Atma. The person who is fully now, look at this, there is a maturity here. Up to fourth, fifth chapter, Bhagavan was telling Arjun the basically theory and the principles. Here he's saying, now Arjun, you are doing dhyan. Dhyan karne ke baad, when you regularly we do meditation, and this is all of us can certify this self-certification. We don't have to go to Bhagavad Gita to say, yeah, Bhagavad Gita sahi keh rahi hai. Bhagavan is saying ki Yog Yuktatma, if you are meditation with Yog Yuktatma, meditation means you are with yourself, self-realization. So Yog Yuktatma Bhagavan ने word use किया. That means saturated with knowledge. जैसे sponge होता है. If you take a dry sponge, there is nothing in that. But if you put sponge in water and take the sponge out, then sponge is full of water. Although we don't see that, it is soaked in water. ऐसे ही ध्यान से क्या होता है, ये जो नॉलेज है, जो भी हम सीखते हैं, मनन श्रवणम मननम, ध्यान से वी आर सोक्ड इन द नॉलेज. रस, हमारे स्वामी जी बोलते थे, दयानंद जी, कि रसगुल्ला का एग्जांपल देते थे. इट इज लाइक रसगुल्ला, योग युक्तात्मा. द गुल्ला हैज नो मीनिंग. द गुल्ला में द गोल, द व्हाइट बोल, व्हाइट बोल आप अकेले खाएंगे तो गले में चिपक जाती हो, यू विल वोमिट एक्चुअली. बट व्हेन इट गोज इनसाइड रस, और 10 मिनट उसके अंदर 15 मिनट डाल के फिर आप निकालते हैं, तो दैट बिकम रसगुल्ला. देन यू कैन ईट 10 ऑफ देम. अदरवाइज एक भी नहीं खा सकते सूखा. तो योग युक्तात्मा में दैट रसगुल्ला, दैट ज्ञान में डूबा हुआ जो चित्त है, दैट इज भगवान इज सेइंग कि इस चित्त को समदर्शना, सेम लॉजिक, एवरी सर्वभूतानि एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स. सर्वभूतानि में भूत मीन्स बीइंग, सर्वभूतानि सर्वदर्श आत्मानम, इन सर्वभूतों में एक ही आत्मा है. समदर्शन, ऐसा उसकी विजन हो जाती है, द इक्वल विजन. ध्यान, दैट इज द रिजल्ट ऑफ ध्यान. एंड वी ऑल कैन प्रैक्टिकली डू दैट. हम लोग सब अनुभव कर सकते हैं. आप, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 3 बार संध्या वंदनम करें, 5 बार ध्यान करें, बहुत सारे, एंड सी द चेंज. देयर इज नथिंग, वी डोंट हैव टू गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी. वी कैन सर्टिफाई our own experience. That's what Bhagavan is saying. So we'll go to 30th shloka. It is continuation, right? All these next 3-4 shlokas. Right? Yo mam pashyanti sarvatra, यो मा पश्यति सर्वत्र, sarvam cha mayi pashyati, सर्वं च मयि पश्यति, tasya aham na pranashyami, सत्याहं न पश्यामि, sacha me na pranishyati. सच में न प्रवेश प्रणश्यति. जो पुरुष सभी भूतों में मुझे व्यापक देखता है और सभी भूतों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता. He who sees me everywhere and sees all in me, I am not lost to him, nor is he lost to me. See, now Bhagavan is, see, the previous shloka, Bhagavan is saying that you see that Atma in everyone. Now he is raising the level a little bit. जैसे होता है ना, हम लोग जो वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें डिफिकल्टी लेवल, वो whatever, sudoku or anything, there is a difficulty level, you can choose higher. So now he is bringing that knowledge to a higher level. He is saying, मुझे देखता है. अब अभी तक तो आत्मा देख रहा था, हाँ, इसे कि मुझे ही देखता है, परमात्मा सब में देखता है. ही सेइंग, तो सब भूतों में माम पश्यति, मुझे देखता है. सब कितनी बड़ी बात है. आई मीन, अब वो जैसे वही कहावत है, कहते भी हमारे यहाँ, बहुत पुरानी कहावत है कि मंदिर के अंदर वो जो पत्थर की मूर्ति है, उसमें तो तुम्हें कृष्ण दिखते हैं, लेकिन बाहर निकलते मंदिर से और कोई किसी जरूरतमंद होता है या कुछ किसी को ऐसा, तो आपको उसके अंदर दिखता है कि क्यों मांग रहा है,
ऐसे हमारे ग्रैंडफादर बोला करते थे, हु आर यू टू डिसाइड। मंदिर के पास जाते लोग मांगते थे, हम लोग, अरे ये क्या मांग रहा है, पैसे क्यों मांग रहा है, काम करता नहीं है। तो बोले कि उस पत्थर की मूर्ति में कृष्ण दिखता है, ये इंसान में तुम्हें जो नहीं दिखता भगवान। इस लाइक भगवान जी कि ये सब में मुझे, जब मुझे देखने लग जाएगा भगवान से, तब मैं भगवान से तस्य अहम न प्रणश्यामि। प्रणश्यामि का मतलब है नश, नश शब्द आया, नश जिसे नाश बोलते ना, प्रणशा नशामि। मैं अदृश्य, नष्ट होना मतलब अदृश्य होना, उससे मैं अदृश्य नहीं होता हूँ। जो मुझे सब में देखता है, मैं उसके अंदर हमेशा रहता हूँ। इट्स लाइक दैट। कितना बड़ा प्रॉमिस भगवान ने कर दिया कि एक बार देखो तो सही सबके अंदर मुझे, फिर मैं तेरे अंदर हमेशा रहूंगा। लेकिन वैसा वही पुरानी कहानी भी है ना, कि एक बार भगवान इंसान को, जो भगवान ने इंसान को बनाया, तो वो बना दिया, उसको बुद्धि भी दे दी, और वो रोज पूजा कर रहे, ये मांग रहे भगवान से, एवरीडे ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने इतने जप करूंगा। तो भगवान ने बोला, यार ये रोज आ जाते हैं, ये मंदिर आ जाता है, कभी लोग स्वर्ग तक भी आ जाते हैं। तो उन्होंने नारद जी को पूछा कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, मैं परेशान हो गया हूँ, ये लोग, मैं किस मंदिर में बैठता हूँ, इसमें आ जाते हैं, जहाँ जहाँ जाऊँ आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला, नारद जी बोले, भगवान एक काम करो, आप आदमी के दिल में बैठ जाओ, मनुष्य वो वहां कभी नहीं जाएगा आपको ढूंढने। तो तब से भगवान हमारे दिल में बैठे हैं, हम भगवान को वहां ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, और तीर्थों में ढूंढते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं तेरे दिल के अंदर। ओनली कंडीशन इज कि तुझे सब में मुझे देखना पड़ेगा, तब मैं दिल में भी दिखूंगा। दैट्स व्हाट ही, दिस इज एक शेर भी है इस पे, बट दिस इज। और भगवान नेक्स्ट कंडीशन भी कह रहे हैं, समय सच च समय न प्रणश्यति, वो मेरे लिए नष्ट नहीं होता है। मतलब दो बहुत साइड है, कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा और तू मुझे नहीं भूलेगा। दैट इज सो, द कंडीशन इज दैट कि ध्यान से आपको कोई, पहली जो बात बताई है कि पवित्र सात्विक भाव इतना बढ़ाना पड़ेगा कि ध्यान में आनंद आ जाएगा। जब आनंद आ जाएगा तो फिर सब में ईश्वर दिखेगा। हम लोग भगवान विष्णु की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यान गम्य। विश्वाधारम गगन सदृशम, पूरा विश्व ही इसीलिए नाम विष्णु रखा उनका। पूरे विश्व में समाये हुए हैं विष्णु। विष्णु का मतलब ये ऑल परवेडिंग, एक एक कण में भगवान है, इसलिए नाम विष्णु दिया है। तो गगन सदृशम मतलब ये पूरा जो गगन या आसमान दिख रहा है, ये विष्णु ही है। इट्स लाइक दैट, दैट इज अ प्रार्थना। भगवान के ऐसी प्रार्थना मन से करें। ये प्रार्थना तो हम सबको याद होगी, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं सब जगह है। तो एक कहानी भी आती है कि वो नानक के बारे में, या तो बहुत लोगों के अलग अलग संतों की कहानी है, कि वो एक बार कहीं, उनको रात में सोना था मंदिर में, तो देयर वाज नॉट इनफ स्पेस मंदिर के अंदर। वो शिव जी का मंदिर था। अब वो कुछ ऐसा था कि ही हैज टू स्लीप वेयर हिज लेग्स आर लाइक टुवर्ड्स शिवलिंग। तो कोई सो गए, तो एक पंडित जी आए, ने उठाया, ये क्या सो रहा है, ऐसे सोते हैं, यू कैनॉट स्लीप लाइक दैट, पैर भगवान की तरफ नहीं होने चाहिए, ये तो शिवलिंग है। तो उनको उठा दिया। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, मेरे पैर उधर कर दो जहां भगवान नहीं है। मैंने तो सुना भगवान सब जगह है, विष्णु। तो उनको कह रहे, वो ये कहानी तो हमने बहुत बचपन से सुनी है, बट ये हम पे भी लागू होती है, कि हम सिर्फ एक जगह ही भगवान देखते हैं, या मंदिर में देखते हैं या मूर्ति में देखते हैं। भगवान कह रहे हैं सब जगह है। न हम प्रणश्यामी न समय प्रणश्यति, न मैं तुझे भूलूंगा न तू मुझे भूलेगा। दैट पुट्स इट। So with that we'll go to 31st श्लोक. But again the same thing he is saying. सर्वभूत स्थितम यो माम सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्वम आस्थितः भजति एकत्वम आसितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। बड़ा प्यारा जो पुरुष एकत्व में स्थित होकर सभी भूतों में स्थित मुझे भेजता है, वह योगी सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी मुझ में विद्यमान है। He who, established in oneness, worships me, abiding in all beings, that yogi dwells in me, whatever be his mode of living. Yeah, so it's a very nice words. One is that एक ही भाव से, मीन्स यू आर कंप्लीटली फोकस। तो ऐसा नहीं है कि आज, अब जैसे हम लोगों के यहाँ टिपिकल हम लोग होता है ना, कि आज
सोमवार है तो शिव जी की पूजा करेंगे, मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा करेंगे, बुधवार है तो गणेश जी की पूजा करेंगे, गुरुवार है तो सरस्वती, शुक्रवार है शनिवार, हमने बना रखा है दैट, बट वी कंफ्यूज अवर सेल्फ. द पर्पस वाज नॉट दैट. पर्पस वाज दैट कि एक ही भगवान का अलग अलग दिन, थोड़ा सा वैरायटी कर दी, लेकिन गोल एक ही भगवान है, कोई अलग अलग नहीं है. बट वी, सो अगर एक ही भाव से, यू जस्ट मेक श्योर दैट देयर इज वन ब्रह्मन, ऑल दीज आर मैनिफेस्टेशंस. सो भगवान से ये समझना पड़ेगा. सो एक ही भाव से, द विजन ऑफ वननेस, अगेन द सेम थिंग. भगवान इज एवरीवेयर, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, हनुमान जी सब में है. दैट इज एक ही भाव, वननेस में. पहले भी जो समदर्शना, सो दैट्स व्हाट सर्वभूत भूतस्थ स्थितम, सेम चीज रिपीटिंग. इफ व्हेन यू सी माई सेल्फ, भगवान और डिविनिटी ऑल ऐसे भजता है सर्वथा, सब प्रकार से. वर्तमान शब्द मीन्स द वर्तमान मीन्स शब्द इज लाइक द करंट, बट इट इज, उसका एक वर्तमान का मतलब एग्जिस्टिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट इज वर्तन. सो कॉन्स्टेंटली भगवान इज देयर इन योर थॉट, द डिविनिटी, in all aspects of life, whether you are doing a job, whether you are a man or woman or this or that, in all situations. भगवान से ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्वान को ही भगवान उसके दिमाग में रहेंगे, या कोई पंडित होगा उसके दिमाग में. भगवान से रहे जो भी ये करेगा, all aspects of his or her life मेरे में ही बरतता है, मतलब मुझ में ही और शी विल अबाइड इन मी. तो यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन in आध्यात्मिक यात्रा. it is available equal for all. जैसे हम लोगों के, I mean there are traditions, we make that this you can do. I mean there are certain, all religion, all tradition of the world has that certain things ladies cannot do, certain things these people cannot do, certain things these. No, here Bhagavan is saying no. The condition is that एक ही भाव, if you can see some darshana in all, you abide in me. That is Bhagwan's promise. कोई पंडित बोले या जो शास्त्र बोले, भगवान का प्रॉमिस भगवत गीता में, this is my promise, if you have some darshan, you abide in me all the time. जैसे वही पहली बात है, न प्रणश्यामि न प्रणश्यति, न मैं तुझे भूलूंगा न तू मुझे भूलेगा. And that's what भगवान is saying. So how do we do that? रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि constantly remain in भगवान, so that भगवान live you. He used to give an example. किसी ने पूछा था तो and he said, okay, hold on, there was a murti of Durga ji. Hold on the Durga ji's leg with one hand, that's right, and the other hand you can keep doing the work. जो मंदिर का काम था, सफाई करना है. So he said, that's it. एक हाथ से भगवान पकड़ लो, राम पकड़ लो, एक हाथ से काम पकड़ लो. Then भगवान will abide in, and that's what actually भगवान is saying. In all the conduct, everything भगवान will abide in. So he is talking about, and again, like this whole 4-5 shlok is talking about. Yeah, we'll read one more shlok and then go to the Arjun question. Atmo, this is 32nd shlok. Atmo pammyena sarvatra आत्मा पद्मेन सर्वत्र samam pashyati yo Arjuna. समम पश्यति यो अर्जुन. Sukham va yadi va dukkham सुखम वा यदि वा दुःखम sayogi paramo matah. से योगी परमो मतः. हे अर्जुन, जो योगी अपनी आत्मा जैसे सभी भूतों को समान देखता है और सुख या दुख को भी सभी भूतों में समान दिखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है. क्या बात. He who, through the likeness of the self, O Arjuna, sees equality everywhere through joy and sorrow, he is considered a supreme yogi. So again, all these 5-6 shlok, one thing is common. What Bhagavan is saying, that some darshana, that is the goal of all this teaching, that I should be able to see Bhagwan in everyone. Bhagwan means divinity in everyone, and that is actually the goal of all the teaching. Right? There is nothing beyond this. कोई भी चीज हम लोग सीखते हैं, do right
to others as you want others to do to you. It's the principle, right? So that we are all same, right? So there is and that's where Bhagavad Gita comes. I personally feel very handy because Bhagavad Gita explains it in very simple term. So we all know that Emerson, that, Waldo Emerson, who's a sage of Massachusetts, people call him. He was and David Thoreau, both were kind of contemporary people, and they were both fan of Bhagavad Gita and Vedanta. They studied Bhagavad Gita and Vedanta because they kind of following the Unitarian Church, not the traditional Catholic Church, which has Trinity. Like there is a God and there is a Son of God and there is a Spirit, right? They believed, Emerson, and that's why he got attracted towards Bhagavad Gita. Actually, Emerson has said that in the morning, my intellect take bath in the teachings of Bhagavad Gita. That was one of his articles. He said that in the morning, my intellect take bath in the teachings of Bhagavad Gita. The exact word were different, but I'm just saying that was because of they had already thought of. There's a Unitarian Church. We have seen that there is not too many, but there are who believe that just everything is God. That's it. There is no Trinity kind of thing. Just one God. Everything is God. Nature is God. So they got attracted towards Bhagavad Gita and Vedanta because of Advaita Vedanta. That Vedanta says the same thing. Everything is Bhagwan, Brahman. So that's what and actually he wrote a couple of times that. So there is a guy, the professor Jeremy David Engels at Penn State University right now. He has written a book very recently, 3 years ago. The book is called Ethics of Oneness. And he says this book is about ethics of oneness based on Emerson, Whitman, and the Bhagavad Gita. You can look at Amazon, the Ethics of Oneness by Jeremy Engels, Emerson, Whitman, and the Bhagavad Gita. Because Emerson was already attracted, and this professor is still teaching at the Penn State College, and he's a professor there, and he wrote this book 3 years ago during COVID time, because COVID time everybody was talking oneness. So he came up. So that he's saying that Bhagavad Gita teaches, that's what the shlok is saying. Everything is one. And this is a famous quote by Emerson, which says that we see the world piece by piece as the sun, moon, the animals, the trees, but the whole, which these things are shining part of, is the soul. His word is the soul. यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं आत्मा परमात्मा. So he is saying we are seeing the world piece by piece, moon, animal, trees, but they are all shining. They are all parts of one shining soul. He said soul, but it's Paramatma. That's why he was attracted towards Bhagavad Gita. That's because Bhagavad Gita says the same thing. तो जैसे हमारे यहाँ एक बहुत प्यारा गाना है सत्यम शिवम सुंदरम कर, सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें एक लाइन स्टैंजा आता है उसके अंतरे में, एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता, दया करो प्रभु एक बने सम, सबका एक से नाता, सत्यम शिवम सुंदरम. यही बात बोल रहे हैं, सबका एक सूर्य है. हम लोग which part of the world doesn't matter, right? Is one sun for us, one earth, one गगन, एक ही गगन है हम सबका. किसी हम बोल देते हैं एयर स्पेस, अमेरिका एयर स्पेस, कनाडा एयर स्पेस, इट्स लाइक इमेजिनरी डिवीजन. Space doesn't say this is Canada. You will see there is a Canada here. We all created imaginary. But एक गगन है, एक सूर्य है, एक ही धरती माता, दया करो प्रभु एक बने हम, सबका एक से नाता. राधा मोहन शरणम, आगे पूरा गाना है सत्यम शिवम सुंदरम. And that's what Emerson. So this shlok is about that oneness. आप पढ़िएगा बुक, अच्छी बुक है, Ethics of Oneness, if you get a chance. And you can read Emerson's couple of articles. He talks about oneness and he talks about Bhagavad Gita. Yeah, so we'll read one more shlok where Arjun's question is, because this is about oneness, right? So इस श्लोक में भगवान 32 में भगवान he's saying कि आत्मो उपमेन्य, जो अपने जैसा सबको देख लगता. उपमा means we can say that that's similar to me. So when I see everyone similar to me, that's why we say that, right? All are created equal. So we are different but not separate. We are all created different. We are male, short,
white, black, doesn't matter. We are all different in that sense. Physiologically, we are different. But adhyatmic, spiritually, we are one. We are not separate. We are connected to one divinity. That's what Emerson, I mean, you can read Emerson, he says that. I'm not just making it, he says that. इसके लिए हम लोगों के when we say अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये किसी और का है, इस तरह की गणना में इस तरह की काउंटिंग are done by the narrow-minded people. Ayam nijah, this is mine. Paro veti, that is yours. Ganana लघु चेतसाम, इस तरह की गणना means calculation. इस तरह की जो transaction है लघु चेतसाम. Chetasam means the mind, or we can say heart. Laghu means narrow-minded. So narrow-minded people say this is yours, this is mine. Udar charita nam, the people who have broad heart or kind heart. Tu vasudhaiva kutumbakam. उनके लिए तो सारी वसुधा ही कुटुंब है. That's where the whole our that shlok comes from. Same oneness. So that's that. And now with this all Bhagwan's teaching is stopped. Now अर्जुन को बताया, फिर अर्जुन ने प्रश्न किया सब सुनने के बाद. अभी पूरा भगवान ने बता दिया मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन से क्या होगा. Now that is the best part of Bhagavad Gita. Arjun kept asking till the last chapter. Same thing. He's asked. अर्जुन का कोई दूसरा प्रश्न है, एक ही प्रश्न पूछता है. And Krishna keep answering, explaining him the same thing in different way. The way he asked, Bhagavan give the answer that way. That's the beauty of Gita. So now let's see Arjun's question. एक ही question, कुछ बड़ा कुछ नहीं, वही चीज पूछता बार-बार. So there is 33rd श्लोक. Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Yoyam yogastvaya proktah. Yoyam yogastavaya chavo प्रोक्तः प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् चञ्चलत्वस्य स्थितं स्थिराम्. स्थिराम्. We'll read the second one. चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः स्थितं प्रमाथि बलवद्दृढम् पर्वाति बलवत्तरम् तस्या अहं निग्रहं मन्ये त्याह पित्रावन्ये वायोरिव दुष्करम् वायु वायास्थितं स्थिरम्. दुष्करम्. अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ. Yeah. So and he next sloka he says that it is difficult like Vayu. So you can read in English, Shipal. Yeah. This Arjuna said, this yoga of equanimity taught by you, O Madhusudana, I did not see its enduring stability owing to restlessness. And 34, the mind verily, O Krishna, is restless, turbulent, strong, and obstinate. I consider it as difficult to control as the wind. See, after listening everything, पूरा भगवान ने मेडिटेशन उसको समझा दिया, पूरी दुनिया में जितना अच्छा समझा, 3 श्लोक में सब कुछ हो गया. उसके बाद वो बात पूछा कि मैं समझ गया हूँ, but he is saying कि I perceive this is very difficult. The reason is because the mind is not stable. Now Arjun's mind, who is one of the best archer of his time, वो सब करता होगा practice. So Arjun is not describing his problem, he is describing our problem too. And that is the reason why meditation is so popular these days. Because everybody thinks that my mind is the problem. And that this is what he is saying. Ki chanchala hi mana Krishna pramathi balavadram. Chanchal means restless. Pramathi means very stubborn. Restless ऐसा नहीं कि 5 मिनट में आ जाएगा. Very stubborn. It doesn't come under control. Balavadranam, very strong. And dranam means firm. Tasyaham nigraham manne vayu, जैसे vayu. I mean, these days we see that tornadoes coming. Tornado is nothing but a certain form of air. That's wind. That's it. Wind has a nature to blow. Anyway, wind blows. Wind stop blowing, we'll all die. But if certain type of the creation of situation comes where wind becomes that tornado, like that what do we call it, whirlwind, then it becomes dangerous. Same wind, which is helping me to survive, it becomes tornado.
become whirlwind, then it will take my life. ऐसा मन ऐसे, that's what he's saying. यही मेरा ही मन है, किसी और का नहीं. कोई किसी और का मन मुझे डिस्टर्ब करता ही नहीं, मेरा ही मन करता है. जबकि मन का काम तो मुझे शांति देना है, मन का काम मुझे गाइड करना. बट सेम मन, लाइक द एग्जांपल ऑफ फ्रॉम विंड टू टर्नेडो और whirlwind. The same man then becomes pramathi, balvatranam, nigram manye, or that man is causing problem. Krishna, Arjun is saying. So he's asking कि क्या करना है. So next time we'll meet, we'll see भगवान का उत्तर क्या है. But अर्जुन की प्रॉब्लम वही जो हम सबकी है कि मन is फिर हमारे बहुत सारे गाने भी बनते हैं मन के, कि मन को पिंजरे में मत डालो, मन का कहना मत डालो. So मन जो है बहुत डिफिकल्ट टू कंट्रोल, राइट. वो गाना मन दौड़ने लगता है अनजानी चाह के पीछे, अनजानी राह के पीछे मन दौड़ने लगता है. मतलब बड़ा स्मार्ट है. आप यहाँ बैठे हुए हैं अभी, हमारी हम लोग सब जानते हैं वी आर डूइंग वन थिंग बट मन इज डूइंग 10 more things. आई एम सपोज टू बी फोकसिंग ऑन समथिंग व्हिच आई एम डूइंग, बट and that's the power of man. So we'll continue next when we'll meet about man, because that's where Bhagwan is going to explain. Actually he has already explained, but he's going to do it again. That's the best part of Bhagavad Gita teaching, and that's the best part of the teacher as a Krishna. So we'll stop here and take the question which last week we left half, second part, which is related to man. So I'll